So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class we are going to discuss about the much requested session about sites. We have actually completed 50 years of sites, है ना? And then IUCN was also very much in the news. International Union of Conservation of Nature, Natural Resource, International Big Cat Alliance. We have seen previous year question. Then people have asked कि सर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा. मैंने कहा चलो सब डिस्कस कर लेते हैं एक ही साथ. So I'll discuss all those things in today's class. And we have seen IUCN World Congress also recently happened, है ना, in United Arab Emirates, है ना, UAE में. So I've decided to discuss all those things. And a site, especially, it has completed 50 years. And we have seen question of International Big Cat Alliance, है ना. So this was actually demanded by you all. आप ही लोगों ने डिमांड किया, तो हमने कहा चलो ठीक है डिस्कस करते हैं. So let us begin with what we call it as IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. Please tell me, where is UNESCO will be covered tomorrow. Kushagra, there'll be a separate class. G20 पर अच्छा देखता हूँ, and I have written G20 also in my notes. If I get a chance, I will schedule it. कोशिश पूरा करूँगा, ठीक है. So IUCN is headquartered where, you have to tell me. Okay, so let us begin, है ना. So basically, I think voice is clear, na? IUCN is headquartered with. Okay, fine. So International Union for Conservation of Nature. It is an organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resource. ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है. हाँ. Headquarter कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. Yes, many people are writing. ठीक है. ग्लैंड जो है ना, वो very near to Geneva. ठीक है, थोड़ा सा पास में ही है उसके. ठीक है. So its job, it was founded in 1948. है ना, फाउंड हुआ था फ्रांस में, बट इट इज हेडक्वार्टर्ड हियर. अच्छा, पता है फाउंड किया गया था यूनेस्को के द्वारा. इट वाज अ यूनेस्कोस इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश IUCN. विल डिस्कस, ठीक है. सो इट्स जॉब इज टू कंजर्व द नेचर एंड टू यूज नेचुरल रिसोर्स इन एन इफेक्टिव सस्टेनेबल वे. इट्स मेन जॉब इज दिस: data gathering and analysis. Of course, when you gather a data, you will analyze it, do research on those data, है ना. Its mission is to influence, encourage, and assist societies throughout the world to conserve the nature. Right? That's the idea behind this. नेटवर्क ब्रेक कर जा रहा है क्या? Is it so fair again happening? नेटवर्क ब्रेक कर जा रहा है क्या? Is it so? I think it is fine. Okay, so ये हो गया. IUCN does not aim itself to mobilize the public in support, but it tries to influence the action of governments. Yes, ठीक है. And सबसे important ये है, IUCN comes up with its red list of threatened species, which tells us कि which species is how much threatened. Okay, that is what you should be knowing. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेडक्वार्टर, है ना. Where is India? This is Switzerland. So let us zoom it. ये स्विट्जरलैंड है और ये स्विट्जरलैंड का वेस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर. ठीक है, लेट मी जूम इट इवन फर्दर. तो ये पूरा स्विट्जरलैंड हो गया. ठीक है. द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न. दिस सुना होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड मेनी टाइम्स. ये है जेनेवा, वेयर यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, WTO, WMO और बहुत सारी चीज का हेडक्वार्टर है. एंड दिस वन इज एक्चुअली ग्लैंड. ठीक है, IUCN हेडक्वार्टर. ठीक है, बर्न इज द कैपिटल. हाँ, अच्छा, लुजैन क्यों फेमस है? देयर इज वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड देयर इज अ ट्रीटी ऑफ लुजैन. ठीक है, आपने पढ़ा होगा 1920s 21 में. सो इफ यू हैव रेड वर्ल्ड हिस्ट्री, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. ठीक है. ज़ूरिच भी कई बार न्यूज में रहता है. लॉट ऑफ टाइम्स ज़ूरिच रिमेन्स इन द न्यूज. खैर, सो दिस इज एक्चुअली IUCN रेड लिस्ट. ओके, सो दिस IUCN रेड लिस्ट contains they have categorized plants and animals. Flora and fauna matlab wahi plants and animals. They categorize this into this. Like, for example, the first, like the extinction risk goes in the top direction, in the above direction. For example, extinct. If let's say there's a dodo, है तो extinct हो गया ना. There was a bird called as dodo, so that will be categorized here. Extinct in wild मतलब wild में नहीं मिलेगा. You will not find it wild, but you will find it in protected areas. Protected area like national park, zoo वगैरह में मिलेगा. That is called as extinct in wild. तो open में नहीं मिलेगा. You will not find any animal or a plant, but you will find it in protected areas. ठीक है.
प्रोटेक्टेड एरियाज में लिख दे रहा हूँ, साफ से लिख देता हूँ, प्रोटेक्टेड एरियाज. Then उसके नीचे below it is critically endangered, then below it is endangered, then vulnerable, then near threatened, then least concerned, then data deficient. ठीक है, data deficient मतलब data नहीं है, not deficient. So that is how it is. Now, when you read about that, you will get to know that, for example, let's say you read about Wikipedia of tiger. I'm just giving example. So you'll find it here written conservation status of IUCN. See, extinct and wild, critically endangered, this is endangered. So basically, according to IUCN Red List, tiger is endangered species. Is it clear? Is it clear? Yes or no? Tell now. So I'm telling you also how to read things, how to read Wikipedia, etc. I hope it is clear. और नीचे वाला भी एक है CITES Appendix 1. This we will discuss in today's class also. ये भी discuss करेंगे. What is CITES Appendix? I hope it is clear. Why people are not responding, I don't know. जवाब तो दे दो आप लोग, है ना? So IUCN we have discussed. GLAD में headquartered, we were talking about IUCN, है ना? ठीक है. So let's talk about IUCN further. Headquartered in GLAD, Switzerland, है ना? IUCN has observer and consultative status of United Nations. So it is actually not a member but an observer in United Nations. Okay, and it was involved in establishing Worldwide Fund for Nature and World Conservation Monitoring Center. इस दोनों को establish करने में भी IUCN का रोल था. ठीक है. So initially इसका कुछ और नाम था, अब नाम चेंज हो गया, IUCN हो गया. That's what you should know. Okay. Now, so basically, who are the members? Not only countries but others also. 1400 members है. तो country तो 193 है ना? So there are actually states, government agencies at national and sub-national levels, NGOs, large and small, indigenous people are also. Scientific and academic institutions, business association, all these are members of IUCN. Okay. So जैसे इसमें क्या आ जाएगा? State government agencies, sub-national government यानी state governments को कहते हैं यहाँ पे. Provincial government. Like for example, the government of Maharashtra. So that will be called a sub-national government. Then national, international, non-governmental organization, NGOs भी होते हैं, फिर indigenous peoples की organization, ये सब है, all are actually members of IUCN. WWF is Worldwide Fund for Nature. Yes, ये तो है. And do not confuse with World Wrestling Federation. वो अलग होता है. ठीक है, वो wrestling वाला WWF. So that is what I'm talking about. I have told you in the beginning of the class that it was formed with the UNESCO's initiative. IUCN जो है ना वो UNESCO का ही initiative था 1948 है ना, France, through the representative from UNESCO. Okay, that is what you should be knowing. ठीक है. IUCN अब IUCN जो है ना, it was very much instrumental in Stockholm Conference also 1972. I have told you in this class. ये वाली क्लास देखा है आप लोगों ने, COP30? Yes or no? You have seen this class, COP30. I had discussed in the beginning of this class talking about Stockholm Conference 1972. So IUCN had role in that also. It participated. Okay. IUCN also led to the drafting Convention on Concerning Protection of World Culture and Natural Heritage. ये भी एक है, but ये less important है. But these two are very important. CITES and Ramsar Convention. So IUCN का ही है ना. IUCN was also involved in drafting these things. कौन? CITES और Ramsar Convention. So we'll discuss about these two. ठीक है. सबसे पहले let's talk about Ramsar. है ना. So Ramsar Convention, I'm sure you must be aware, 2nd February 1971 signed. That's why 2nd February is called as World Wetland Day. Okay. है ना. Convention on Ramsar Wetlands. Ramsar is a city in Iran. Okay, I'm sure. Yes, you must be aware. And this year the theme was protecting wetland for our common future. This is Ramsar, a city in Iran. Now, please tell me how many Ramsar sites are there in India and which state is having the highest number of Ramsar sites? How many Ramsar sites are there in India? Which is the 94th one? Maximum is in Tamil Nadu, which is the 94th one. तो देखो 94th one is this one. गोगाबी लेक कटिहार बिहार में. ठीक है. तो क्या था, recent days में three were added. गोकुल जलाशय in Bihar and उदयपुर झील in Bihar. These two were added in September. And in 5th November की news थी when Gogabi Lake Katihar was added.
So now we are having 94th, है ना, total. Okay, that is what you should know. Maximum wetlands are in Gujarat, but maximum number of Ramsar sites are in Tamil Nadu, and these are different. Not all wetlands are covered under Ramsar sites. ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा. If they are asking highest number of wetland area, I mean area I'm saying, so Gujarat, highest number of Ramsar sites, the answer is Tamil Nadu. Largest one, of course, Sundarban. Sundarban is the largest wetland, largest mangrove forest, largest delta. याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ना. Largest wetland, largest mangrove forest, largest delta, Sundarban. Okay, ठीक है. So Ramsar site 94 हो गई, ये हो गया. Let's move on further. Now let's talk about sites. Again, sites कहां से हम लोग बात कर रहे हैं? Sites we are talking from here. We have discussed that IUCN had role in drafting sites and Ramsar. So Ramsar we are done. Let's talk about sites. Very very important. आगे चलते. Yes. So 50 years of sites. So basically it was signed in 1973 but effective 1st July 1975 को हुआ. So 50 years we have completed. अच्छा, July 1975 में another important event happened in India's history. What was that? Around July, around this date. Not exactly this date, but around this date. A very important event happened. 1st July 1975 के आसपास इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था. Emergency, yes, 25 June 75. We have taken a separate class. Please go to YouTube and search in 50 years of emergency career launcher law entrance. You will get a maroon color thumbnail. है ना. खैर आगे चलते हैं. CITES, Convention on International Trade in Endangered Species for Wild Flora and Fauna. नाम में ही पता चल गया, also known as Washington Convention. It means that when we are doing a trade of plants and animals, especially the endangered ones, we have to do some regulation, है ना, protecting endangered plants and animals from threats of international trade. आपको पता ना है कि इसमें भी बहुत पैसा कमाया जाता है. Like a lot of illegal trades leads to a lot of, like, these are done by organized crime networks, etc. I'm sure you must be aware of it. ठीक है. So it aims to ensure that international trade, import and export in specimens of plants and animals include sites does not threaten the survival of the species. मतलब खास करके जो threatened species जो critically endangered या endangered उस टाइप के लिस्ट में, उन लोग के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना. That's the idea behind this, है ना. They're having 3 working language. This is voluntary. Participation is voluntary. अच्छा, ये वाली all those sites is legally binding. If you are a part of sites, if your country is a part of site, of course it is legally binding, but it does not take the place of national law. This is very important. This is a previous year question of a very prominent government exam. Exactly statement लिखा होता. Sites is a legally binding but does not take the place of national laws. Okay, means like ऐसा नहीं कि national जो countries के law उसको replace कर देगा, but the idea is it is legally binding if you have signed and ratified it. ठीक है. Address depleting results from demand of luxury goods such as force western countries. हाँ, ये भी होता था ना कि तस्करी वगैरह करवाया जाता है ना. Like illegal trade is being done like this, है ना. बड़े महंगे महंगे जूते, ये सब जैकेट्स वगैरह होते हैं, उसमें टाइगर का फर या एनिमल का फर यूज किया जाता है जो कि प्रोहिबिटेड है. तो उसको रोकने के लिए ना. So that's the idea behind this, to stop those things. The convention was signed in Washington DC, है ना, 7 March 1973. 2 years later it came on force, effective. So अगर आप रेड से देखो, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट फ्यू, जैसे साउथ सुडान है, कुछ कंट्रीज छोड़ दिया, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर मेंबर ऑफ साइट्स, है ना. और 185 पार्टीज है, 184 कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन. इट्स लाइक दिस. सो वी आर हैविंग 193 कंट्रीज. सो ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज है, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट. ठीक है. ओके, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस. सो इंडिया इज आल्सो मेंबर, ऑफ कोर्स, नो डाउट, है ना. सो इन लोग अपना लिस्ट बनाते हैं, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का. ये दिखाता हूं, है ना. तो इसमें फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड अपेंडिक्स होता है. अपेंडिक्स 1, दिस इज द साइट्स अपेंडिक्स 1. इसको कहते हैं साइट्स अपेंडिक्स 1. सो दे हैव पुट those animals and plants which are threatened with extinction not permitted to do the trade. Non commercial trade is strictly controlled, है ना. And so बहुत सारे इसमें commercial trade in wild resource of is not permitted. Commercial और non commercial trade allowed नहीं है. If an animal or plant is put under appendix 1, तो ये सब appendix 1 के अंदर में स्नो लेपर्ड हो गया, है ना, ये सब देख लो. Similarly we have appendix 2, थोड़ा सा easier है ना, not necessarily threatened, so this is slightly less stringent. ठीक है, बस एक आइडिया रटना नहीं है, एक आइडिया रखना है. Then we have appendix 3, ठीक है.
that are protected in at least one country. That हाँ, अगर कोई भी एक country protected है तो उसको CITES Appendix 3 में डाला जाएगा. So that is less protected technically, है ना. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू टाइगर आपने देखा इंडेंजर्ड में IUCN में और CITES Appendix 1 में मींस मोस्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इज देयर. इट इज एन Appendix 1. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए. सो जस्ट हैव एन आइडिया दैट Appendix 1 हाईएस्ट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है, कुड बिकम थ्रेटेंड प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री. तो थ्रेटेंड ऐसे एरो बना दिया. Appendix 1 मोस्ट, देन सेकंड, देन थर्ड. एंडेमिक स्पीसीज अलग होता है सचदेवा. एंडेमिक स्पीसीज मींस दोस स्पीसीज व्हिच आर फाउंड ओनली इन दैट रीजन. ठीक है. नॉट अलाउड टू ट्रेड, अलाउड बट रेगुलेटेड, अलाउड बट कंट्रोल्ड. ठीक है. तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है. दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना. अब देखो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अपेंडिक्स, बिकॉज CITES Appendix is important because it is linked with Wildlife Protection Act 1972 also. Okay, how? I'll tell you. So Wildlife Protection Act was passed in 1972 to ensure the implementation of national park, wildlife sanctuary, etc. आपको पता होगा. So earlier it had 6 schedules. इसमें 6 schedules होते थे. ठीक है. 1972 में ये 6 schedule होते थे. These were the 6 schedules. Okay, so the first 2 were quite strict. The third and fourth were comparatively less stringent. The fifth provision was regarding declaring vermins. Vermin declare अगर कर दिया गया, if the government has declared under 5th schedule vermin, then that animal can be killed. Allowed poaching if it is declared. And the 6th one was related with protected plant species. ओके. वही तो बताया, अगर वर्मिंग एनिमल को डिक्लेयर कर दिया गया इसको, तब आप मार सकते हो उसको. यू कैन किल इट. दैट्स द थिंग. सो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, an animal declared as vermin means it is loses legal protection, making it permissible to hunt or kill within a specified area or a specified time. ओके. जैसे एक बार ये हुआ था, काफी हंगामा हुआ था 2016 में. बिहार इंटेंडेड टू किल नीलगाय वाइल्ड बोर एज वर्मिन. सो ये सब में कुछ दिन के लिए शायद था, अलाउड था 1 ईयर. सो ये सब पे न्यूज आई थी. जस्ट रीड इट. आप सर्च मारना ना वर्मिन, यू विल गेट टू नो. सो ये अलाउ कर दिया गया था. अब नाउ द थिंग इज दिस इज 1972. ओके. नाउ द अमेंडमेंट वाज डन इन 2022. So instead of 6 schedule, now we are having only 4 schedules, and this is current implementation. तो इसमें क्या है? Schedule 1 strict, the most strict level of protection. Schedule 2 lesser level. ठीक है. Schedule 3 is protected plant species, जो कि यहां था पहले. Earlier it was in 6th schedule, now it is here. And the last one is related with CITES. CITES appendix में जो लिखा है ना वो यहां डाल दिया गया. CITES appendix में. They have put it here. Why? To implement, to enforce, to implement CITES, because we have signed the CITES. India has signed and ratified the CITES. So that's why India did the amendment to insert those things here. जो CITES related. Is it clear? I hope it is clear. Clear है ना? या कुछ पूछना तो पूछिए, बताइए. हाँ, वर्मिन कुछ दिन के लिए डिक्लेयर किया था, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए डिक्लेयर किया था. 1 साल 6 महीना एक पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ. ऐसा नहीं कि जहां चाहो हम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या, इस एरिया में आप एक पर्टिकुलर एनिमल को मार सकते हो 6 महीना तक, मतलब 6 महीने तक अलाउ किया गया. जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, दैट्स द आइडिया. तो आप पूछोगे सर यहाँ पे तो वर्मिन नहीं है. नाउ हाउ अंडर द न्यू अमेंडमेंट द वर्मिन कैन बी डिक्लेयर्ड. सो यस, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द शेड्यूल, बट सेपरेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू नोटिफिकेशन, है ना. ये 2022 अमेंडमेंट से नाउ वी आर हैविंग 4 शेड्यूल्स ओनली. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. ये हो गया. ये 72 का अमेंडमेंट है, ये 2022 का अमेंडमेंट है. रिड्यूस टू 4 शेड्यूल्स, है ना. प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज यहाँ पहले 6 में था, अब 4th में आ गया. ओके. सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स. ये हो गया. ये आप समझ गए. यू विल बी एबल टू रीड. ओके. यस. अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया है. आई हैव टोल्ड यू, बट स्टिल आई एम अगेन रिपीटिंग इट. अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, if you visit any national park, wildlife sanctuary, zoo, or any other protected area, please do not feed animals. Otherwise what will happen? Write in the comments. आप जानवर को खाना उना मत दीजिएगा, बिस्किट कुछ मत दीजिएगा अगर आप प्रोटेक्टेड एरिया में गए, यानी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जू या कोई ऐसी जगह गए तो. अदरवाइज ऑफ कोर्स अ केस कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू. तो इस मुसीबत में नहीं बोलना है ना. कैन पीपल किल एंडेंजर्ड एनिमल्स अंडर सेल्फ डिफेंस?
सेल्फ डिफेंस आई एम नॉट श्योर, कुशाग्रा, बट हो गया मोस्ट लाइकली। सेल्फ डिफेंस में जनरली तो आई नीड टू चेक इट कि क्या उसका प्रोविजन है, बट जनरली सेल्फ डिफेंस में जनरली इट इज अलाउड, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग। हाँ, जनरल लॉज में तो ये होता है कि सेल्फ डिफेंस में अलाउड होता है ना, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, हमको देखना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या लिखा है। खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट IUCN। हम लोग IUCN पर थे। IUCN का अबू धाबी में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। कुछ इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। IUCN, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। सो UAE इज हियर, दिस इज अबू धाबी, है ना? So here what happened, some important thing happened, like IUCN Congress में India's first dugong conservation reserve in Park Bay gains global recognition। तो इनकी तारीफ की गई थी यहाँ। ओके, सो पार्क स्ट्रेट यहाँ पे, ये जो तमिलनाडु में यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में ना, पार्क स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार लिखते हैं। So here you will find dugong conservation reserve. What is dugong? इसको कहते हैं dugong, stellar sea cow. This is not a fish, this is a mammal, है ना? stellar sea cow कहते हैं। It is vulnerable under IUCN Red List and CITES Appendix 1 में, ठीक है? इन CITES के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन में। ओके, सो dugong is actually a mammal. They are found in this region। तो यहीं पे ना, यहीं पे ये dugong conservation, ठीक है? इवन देखो UAE में भी थोड़ा सा है। Yes. So this conservation reserve got open in 2022, but it was like it gained popularity right now. Recognized by which body? IUCN Congress, बताया ना अभी IUCN Congress हुआ। IUCN World Conservation Congress का फोटो तक दिखा दिया। IUCN World Conservation Congress हुआ अबू धाबी में। There it was recognized, मतलब उसकी बात कही कि हाँ इंडिया ने अच्छा किया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए दुगों को, ठीक है? That's what the idea is. Another very very important thing that happened is this, in the same ठीक है, हाँ सितंबर क्लास में बताया था, in the same meeting जो ये वाली कंजर्वेशन मीटिंग हुई ना, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, here this report was also brought, IUCN World Heritage Outlook 4. Now why this report is important? Can anyone tell me? We have taught in the current affairs class. इसमें क्या खास है, कोई बता सकता है? I'll be very happy to know if you tell me what is special about this. IUCN World Heritage Outlook 4 report, it talked about very important things. Western Ghat, Kanchenjunga, ये सब की बात हुई. So let's talk about this. So this report classifies the, like what we call it as natural resource, yeah, whatever you can say, natural sites into 4 categories: good, good with some concern, significant concern, and critical. I have taught in paid classes. 4 हिस्सा में इसको बांटा गया, ठीक है? So good sites में there are some Indian sites, good with some concern, some Indian sites, significant concern में कुछ Indian sites है, critical में कोई भी नहीं है, no Indian sites. So we will find Indian sites in these 3 categories. So let us discuss one by one, है ना? ये हो गया, critical में कुछ हो गया, है ना? Here it is. So good में कौन कौन था? Here is good, ऊपर लिखा है। इंडिया की एक साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक इफ यू हैव नॉट डन इट। आई हैव टॉट इन पेड क्लासेस। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट और नॉट डन इट, प्लीज डू इट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर एक गुड विद सम कंसर्न, इसमें इंडिया का ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, है ना? इंडिया का काजीरंगा नेशनल पार्क असम, फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनोसोरस नियर ब्रह्मपुत्र रिवर, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर। फिर इंडिया का केलदो नेशनल पार्क राजस्थान, ऑल्सो नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये हो गया। फिर एक और है नीचे, इंडिया का नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड, नंदा देवी पीक इज ऑल्सो देयर। कुमाऊं रीजन का नाम सुनोगे आपने, ठीक है? देन वी हैव सिग्निफिकेंट कंसर्न में इंडिया का है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, इंडिया का है सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, एंड इंडिया का वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न रीजन। प्लीज रिमेंबर इट, मेक नोट्स, अगर नहीं बनाया है कॉपी पे लिख लो, रट लो, वेरी हाई चांसेस दैट दे विल आस्क क्वेश्चन, ठीक है? तो फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, इसका रिपीटेशन ही है हालांकि गुड का। तो गुड में कौन था? कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है? गुड विद सम कंसर्न में कौन कौन था? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, केलदो नेशनल पार्क और भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, नंदा देवी वैली फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड। फिर सिग्निफिकेंट कंसर्न में कौन आएगा? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। क्रिटिकल में इंडिया का कोई भी नहीं था, है ना? सिर्फ एक था इंडोनेशिया का भी,
सो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. याद रहेगा? इज इट क्लियर? यस और नो? विल यू बी एबल टू रिमेंबर? देखो यार बहुत मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप भी मेहनत करो. आई हैव वर्कड वेरी हार्ड टू मेक दिस पीपीटी. सो एटलीस्ट प्लीज प्रेस द लाइक बटन. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा. मैंने बहुत मेहनत किया इसको बनाने के लिए. सो एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट यू, है ना? यस, आई होप इट इज क्लियर. सो आप रट लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना? 2-3-4 बार देख लीजिएगा तो भी याद हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, ये भी आप लोग की रिक्वेस्ट की थी. 1st April 1973 when Indira Gandhi ji was prime minister, we had seen declining forest tiger numbers. अब देखो टाइगर जो है क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 75% ऑफ इंडिया टाइगर, वर्ल्ड टाइगर इज इन इंडिया. सो इंडियाज रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी दुनिया का 75% टाइगर हमारे ही पास है, तो हमारा रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा ना टाइगर प्रोटेक्शन में. दैट्स व्हाई 1st April 1973 एट दैट टाइम इट वाज रियलाइज्ड दैट टाइगर्स आर बीइंग किल्ड अ लॉट. तो पहले उतना रिस्ट्रिक्शन था नहीं, तो लोग मारते थे, चमड़ा बेच देते थे, कुछ करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट इट इज अ सीरियस थिंग. सो दे मेड प्रोजेक्ट टाइगर, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर नटका वाज एस्टैब्लिश्ड, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टाइगर रिजर्व्स वर डिक्लेयर्ड, है ना? It was declared illegal to kill tigers, and laws were changed accordingly under Wildlife Protection Act. National Tiger Conservation Authority later on was made, है ना? So ये सब चीजें की गई to ensure that the tiger should be conserved. And yes, we have seen the success. देखो 2006 में 1141 था, देखो 36-42, बहुत, है ना? We have increased the tigers population successfully, है ना? Which is of course a good thing. है ना? उसके लिए एक इनिशिएटिव था, स्ट्राइप्स करके एक इनिशिएटिव है, देखना, सर्च करना, स्ट्राइप्स फॉर टाइगर. इसमें क्या कैमरास वगैरह यूज करते हैं उसको नजर रखने के लिए. स्ट्राइप्स टाइगर कंजर्वेशन, ऐसा सर्च करना ना, कैपिटल तो मिल जाएगा आपको. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना? सो पोचिंग को से पोचिंग इन इनकी किलिंग से हैम्पर होता था डिफॉरेस्टेशन, है ना? सो टाइगर्स वेर रिड्यूसिंग इन नंबर्स, है ना? है ना? सो ये सब बातें हुई. तो उसके बाद जो है वी हैव सीन द रिजल्ट. समथिंग अबाउट टाइगर वी शुड नो. लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व. ये पूछना, ये पूछा हुआ कि बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन. लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए, सो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश. ओके, इफ दे आर आस्किंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, देन इट इज मध्य प्रदेश. लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, देन द मध्य प्रदेश, या टाइगर स्टेट भी कहते हैं. ठीक है, याद रहेगा. इज इट क्लियर? होपफुली, है ना? आगे चलते. When do we celebrate Tigers Day? So why 29 July? Because 29 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था रशिया में, where there was a target to double the tiger population. TX2 टारगेट कहते हैं इसको, या T/2 टारगेट, and we have already achieved it. ठीक है, हाँ. तो टाइगर जो है, हाँ, कोनो नेशनल पार्क में चीता लाया गया था. यस, नामीबिया से, राइट. सो वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस, डबलिंग द टाइगर्स पॉपुलेशन टारगेट. एक और है सिमिलर टू दैट, इज एक्चुअली प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना? सो 1992 में, काफी बाद में शुरू हुआ. 1973 वी हैव सीन प्रोजेक्ट टाइगर, 1992 वी हैव सीन प्रोजेक्ट एलिफेंट. एंड अगेन द सेम थिंग, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर द स्टेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, है ना? फ्री रेंजिंग एलिमेंट्स एटसेट्रा. माइग्रेशन कॉरिडोर एलिफेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, अभी 59 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है, उसका नाम है देवरीगढ़ कुछ समथिंग करके. लेट मी चेक इट. देवरीगढ़ टाइगर रिजर्व. यस, देवरीगढ़ है ओडिशा का. दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व रिसेंटली, राइट. हाँ, खैर देखो, माइग्रेशन कॉरिडोर क्या होता है? जो ये जो है ना, टाइगर को नहीं, एलिफेंट को ज्यादा जरूरत पड़ती है. एलिफेंट ने बड़े बड़े एरिया से पूरे झुंड के साथ मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, रोड क्रॉस कर जाते हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन, दे क्रॉस द रोड विद देयर लाइक नॉट अलोन, बट दे एक्चुअली गो इन हर्ड्स, है ना? तो हर्ड कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो बहुत सारे एलिफेंट, ऑल द एलिफेंट्स गो टुगेदर, मूव टुगेदर. सो उसमें जब जाते हैं, रोड क्रॉस कर लेते हैं, उनको माइग्रेशन कॉरिडोर चाहिए ताकि रोड पे नहीं आ जाए, एटसेट्रा एंड ऑल. सो दीस आर द इनिशिएटिव्स. तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट, इनिशिएट किया गया. अगेन सेम, इसके लिए एक माइक करके इनिशिएटिव है, माइक, है ना? मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिमेंट्स. वो भी देखो साइट्स के अंडर है ना? अगेन साइट्स आ गया यहाँ पे फिर से, माइक इनिशिएटिव. ओके, वही हैबिटेट कॉरिडोर्स, इनके लिए कॉरिडोर वगैरह बनाना पड़ता है प्रॉपर्ली. हाँ, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, एटसेट्रा. और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है. दिस वन इज फेमस, है ना? ओके,
सो IUCN का इनका एशियन एलिफेंट, हालांकि सिर्फ एशियन एलिफेंट नहीं होता, एशियन होता है, अफ्रीकन एलिफेंट होता है, 2-3 तरह का एलिफेंट होता है. And which state is having the highest number of elephant in India? So the answer is Karnataka. ये ध्यान रखिए कि सब पूछते हैं कभी कभी, है ना. तो ये आर्टिकल थे भी 14 अक्टूबर 2025 द हिंदू की आर्टिकल है. 60% of total elephant population Karnataka, Tamil Nadu, Kerala में, highest is in Karnataka. Please remember it. These are the facts which are directly asked. अब देखो 1 अप्रैल 2023 क्या हुआ? 50 years of प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट वेर मर्ज्ड, दोनों को मिला दिया गया. ठीक है, जब 50 साल पूरा हुआ तो प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट वेर मर्ज्ड, एंड ऑन दिस डेट अनदर अलायंस, अनदर थिंग केम. क्या आया ऑन 1 अप्रैल 2023? व्हाट हैपेंड? प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड. 1 अप्रैल 20, यस इपका, वेरी गुड परीक्षा मंत्री. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया इस पे. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर. सो इसमें वी आर सपोज टू प्रोटेक्ट टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, जगुआर, प्यूमा एंड चीता. ठीक है, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. अगेन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया. बिग कैट्स, ये 7 बिग कैट्स है ना, जगुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता. इसमें से जो 2 जो है ना इंडिया में नहीं पाया जाता है. सो प्यूमा एंड जगुआर आर नॉट फाउंड इन इंडिया. ठीक है, पता नहीं शक्ल तो सबकी एक जैसी लग रहा है, आई डोंट नो लाइक ठीक से फोटो है कि नहीं. हाँ, खैर जो भी है. सो out of 7, 2 are not found in India, but still India is taking this initiative. That the reason is 75% of tigers are found in India. ठीक है, 7 cheetahs we have brought in Kuru National Park. ये सभी बात हुई है. प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर आर मर्ज्ड, ये मैं कह रहा हूं. ठीक है, नाउ इपका इन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दिस इज एन अलायंस. उसका प्रोजेक्ट टाइगर से लेना देना नहीं, मतलब लेना देना है, लेकिन कहने का मतलब इट्स अ सेपरेट इंटरनेशनल अलायंस. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. So international level countries, so 12 countries have ratified it, है ना. So ये सब countries में नेपाल भी है. ठीक है, headquarter of international big cat alliance, New Delhi. Director general is Mr. SP Yadav and president is Mr. Bhupendra Yadav, Minister of Environment, Forest and Climate Change of India, Government of India. ठीक है, is it clear? ठीक है, और भी इपका जो देखो IUCN वगैरह से भी कोऑर्डिनेशन, इनका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इस सबसे भी कोऑर्डिनेशन. ओके, नेपाल officially joins India-led international big cat alliance. देखो ये अगस्त की न्यूज है. I'm sure you must be aware of that. ठीक है. So I hope this is all about today's class. Tomorrow we will discuss about UNESCO. UNESCO का Man and Biosphere Reserve Program, UNESCO World Heritage Sites were added. Then we have seen some more thing, UNESCO Intangible Cultural Heritage List. ठीक है, एक दो चीज और UNESCO से related न्यूज में था. So we will discuss it in tomorrow's class. ठीक है. So this is all about today's class. Please press the like button, share this video. Please subscribe to the channel. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.